So now let's go on to the intelligent tests. What are the different kinds of intelligent tests that are there? All right. So intelligent tests are of several types. ठीक है, on the basis of their administration procedure. They can be categorized as individual or ग्रुप टेस्ट होते हैं ये, ठीक है, ये इंटेलिजेंस के. दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ईदर वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड. क्या हो सकते हैं? वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द आइटम्स दैट वो यूज्ड अपॉन, वो भी हो सकते हैं, ठीक है. So, depending upon the extent to which an intelligence test favors one culture over another, it can be judged as either culture fair or culture biased. ठीक है. So, according to the nature of the test, ये या तो culture fair हो सकता है या culturally biased हो सकता है. It is against the culture that they are going, या it is going with the culture that they have. Okay. Now, individual or group test. ठीक है. An individual intelligent test is one which can be administered uh, to one person at a time. ठीक है. So individual, जैसे मैंने, I think it's a very self explanatory term, जहाँ पे individual test मतलब one person at a time, and group test होता है जहाँ पे ज़्यादा and several people can also be a part of it. ठीक है. So individual tests require the test administrator to establish a rapport with the subject and be sensitive to his or her feelings, moods and expressions. ठीक है. सो ऐसा है. ग्रुप टेस्ट में हाउएवर इतनी सारी फेमिलैरिटी नहीं होती, ऑपरचुनिटी टू फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स, राइट. सो इंडिविजुअल टेस्ट में पीपल अलाउ टू आंसर ओरली और रिटन, और कैसे भी कर सकते हो. इसमें यूजुअली जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें यूजुअली रिटन फॉर्म में आता है. ठीक है. तो अगर इसमें आपको डिफरेंसेस होगा कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट के क्या डिफरेंसेस है, यू कैन से दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वन ऑन वन बेसिस इन सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली. वन पर्सन का रैपो फॉर्म एंड ये सब आसान होता है रादर देन जो ग्रुप टेस्ट होता है जहाँ पे रैपो फॉर्म करने के लिए मुश्किल होती है. एंड ऑल्सो ये ओरली एंड रिटन दोनों में हो सकता है, और ये रिटन में ही हो सकता है ज्यादातर. देन वर्बल एंड नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट. ठीक है. सो एन इंटेलिजेंट टेस्ट मे बी फुल्ली वर्बल और फुल्ली नॉन वर्बल और फुल्ली परफॉर्म बेस्ड. It may be consist of mixture of all the items and each of the categories. ठीक है. So verbal test require subjects to give verbal responses. ठीक है. Either orally or in a written form. ठीक है. Verbal responses, I know it is a very वो way, but orally ही दिया जाता है, but individually ज़्यादा दिया जाता है. ठीक है. Therefore, verbal test can be administered only to literate people. बट जो आपके नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं वो किसी को भी केटर कर सकते हैं. ठीक है. सो नॉन वर्बल टेस्ट यूज पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस एज आइटम, टेस्ट आइटम. ठीक है. सो रेवन प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस RPM टेस्ट, ठीक है, इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. ठीक है. In this test, the subject examines the incomplete pattern and chooses a figure from the alternatives that will complete the pattern. ठीक है. So specimen item of RPM is given, ये वाला. ठीक है. तो इसमें से कौन सा वाला मिसिंग है? ये फोर्थ नंबर, बिकॉज इन लोगों इसके पैटर्न्स ऐसे हैं और इन 6 में से बेस्ट ऑप्शन हमें फोर्थ वाला लग रहा है, तो इसमें फिट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज एन RPM टेस्ट. ठीक है. रेवंस प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस. बस. परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क. ठीक है. तो परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करता है एंड वो इंसान को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है. ठीक है. रिटन लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर आंसरिंग आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, कोर्स ब्लॉक टेस्ट. ठीक है. कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स, जैसे जेंगा में होता है. The subject is asked to arrange the blocks within the time period. जैसे अगर हम जेंगा के ब्लॉक्स लगा देंगे, so you have to arrange the blocks but within a time period. ठीक है.
A major advantage of the performance test is that they can be easily administered with different cultures, with different kinds of people. So this is all performance based. This is a non-verbal thing, and verbal में होता है जहाँ पे आप written होते हो या orally आप अपने answers को दे सकते हो, ठीक है? Culture fair, culture bias test. Let's read upon this now, ठीक है? So first is intelligent test can be cultured, fair or culturally biased. ठीक है? So many intelligent tests show a bias to the culture in which they are developed. ठीक है? So for example, if I am in India or if I'm in Delhi, for example, right? So my culture will be according to what Delhiites are, how their language is, how their intelligence is all about, right? So it will be culturally fair for the people. So, tests developed in America and Europe represent in urban and middle class cultural ethos. ठीक है? Hence, educated middle class white subjects generally perform well on these tests. The items do not respect to the culture, which is African American or Asian people, ठीक है? Because they are culturally biased test. Obviously, अगर आपने वहाँ पे कोई test develop किया है जो सिर्फ American, European, white people, middle class, that too, so आपकी categories होती है कि which audience that you have to cater to. तो this is one of that audiences, ठीक है? It is nearly impossible to design a test that can be applied equally and meaningfully across all the cultures. Psychologists have tried to develop tests that are culturally fair or culturally biased. ठीक है? और culturally appropriate. That is one of does not discriminating. तो मतलब culturally fair क्या होता है? जहाँ पे वो discriminate नहीं करते हैं किसी भी category में. They will not discriminate on any of the categories. ठीक है? In such tests, items are constructed in a manner that is assess experiences common to all the culture or have questions in which language uses इतना रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं ठीक है इसमें इतना लैंग्वेज का नहीं है एनीबडी फ्रॉम एनी कल्चर वो उनका बेसिक सेंस एंड कॉमन सेंस एंड कॉग्निशन को टेस्ट कर रहे हैं अब हम आते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया इंडिया में किस तरीके के होते हैं Remember this name, S.M. Mohsin, ठीक है, made pioneering attempt in constructing an intelligent test in हिंदी, okay, S.M. Mohsin ने किया था 1930s में, ठीक है, so these are some of the tests which were developed in India, so verbally ये वाले हैं and performance wise ये वाले हैं. Now, S.H. Rice attempted to standardize Binet टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी एट अबाउट द सेम टाइम बहुत लोगों ने बहुत तरीके के टेस्ट किए राइट सो इनके जो नाम है और उनका जो टेस्ट है उसके बेसिस पे ये लिखा हुआ है So, attempt to standardize Binet test in Bengali. Attempts were also made in Indian researchers to develop Indian norms for some Western tests, including the RPM, Weiss, Alexander's pass along, cube construction and Cole's block design. तो ये सारे जो है ये इंडिया में भी उन्होंने बनाने की उसको कोशिश करी है या उसको इंडियन वे में डेवलप करने की कोशिश करी है. Since then, a number of tests have either been developed or adapted from Western culture. Okay, so the National Library Educational and Psychological Testing of psychological test at National Council Education Research and Training, ठीक है, NCERT जिसकी ये किताब है has documented Indian test, ठीक है, तो जो National Library of Educational Psychological Test है सो NLEFT ने एट NCERT में उन्होंने इंडियन टेस्ट को क्रिटिकली रिव्यू किया है ऑफ इंडियन टेस्ट आर पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ हैंडबुक्स ठीक है एंड ये इतने सारे हैं